Good afternoon, students. In the previous videos, we have learned about the macronutrients like carbohydrates, fats, and proteins, which are required in proper amount in our body for the proper growth and development of our body and to repair the wear and tear in our body. Now, apart, these were all macronutrients which we studied about. Macronutrients which are required to our body, जो हमारे body में बहुत important है इनकी requirement, isn't it? Now, apart from this macronutrient, there are other substances also which are very necessary for our body to maintain proper health and also to maintain the wear and tear of our body. And जो हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारे बॉडी में जरूरत होती है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत सी चीजें हमारी बॉडी में हमको लगती है सुधार ठीक होने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा विटामिन्स प्रोटीन्स लगते हैं. तो इन सब के अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है वो और भी हमको जरूरत है बॉडी में, उनकी वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स. Now we will study about vitamins and minerals. Now these vitamins and minerals, they are very important for us and they are needed in very small amounts, but also they at the same time they are very important also. Now these are known as micronutrients. Micronutrients. They are known as micronutrients because they are required in less amount, but they are very important as well. So we should have this vitamins and minerals in proper amount in our body. The different vitamins which are used for our intake, which are required for our intake, they are vitamin A, B, C, D, E, and K. These are very important vitamins: A, B, E, D, E, and K. These are the vitamins which are required in our body. These vitamins are required in our body. Now, although we need vitamins in a very small amount, but they are very important for us. Although a lack or deficiency of any of these vitamins, it will cause the serious disorders in our body. For example, a deficiency of vitamin A over a long period. The deficiency of vitamin A for a long period can cause night blindness. This will cause night blindness. The deficiency of this vitamin. This vitamin, when we are taking in very less amount, so it will cause night blindness and many other diseases also. Now, a deficiency of vitamin D, similarly, which is very common nowadays because people, they don't go in sunlight because sunlight is the main source of vitamin D. जब हम sunlight में बैठते हैं तो हमारी जो skin है, हमारी body है, वो automatically vitamin D बनाती है. लेकिन सन में अभी कोई ज्यादा बैठता नहीं है या ज्यादा टाइम तक सन बाथ नहीं ले रहे हैं लोग, तो उससे क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो जाती है और इससे हमारे कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, उससे हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती है. नाउ विटामिन जो है वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं. इम्यूनिटी हमारे शरीर की बढ़ाते हैं. इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब व्हाई improve immunity means they protect us from various diseases. Now in the time of COVID and Corona, you must have always heard this, you have to improve your immunity. So to improve the immunity, you have to always have the these vitamins in proper amount. Vitamin A, B, C, D, E, and K. All the vitamins are very, very important for us. So why they are important? So they
keep us healthy, and they save us from many diseases, and at the same time they improve our immunity also. Now, for example, you all know that vitamin A deficiency will cause night blindness. Vitamin B is composed of many vitamins, so it is known as vitamin B complex. उसमें B1, B2, B6 सारे vitamins होते हैं जो आपको आगे ही क्लासेस में आप पढ़ोगे, बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन विटामिन सी आपको कोल्ड और कफ से बचाता है. विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपकी बोन्स वीक हो जाती है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बॉडी में. विटामिन ई भी बहुत जरूरी है आपके लिए. के भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है. अगर इफ विटामिन के इज नॉट देयर इन योर बॉडी, योर ब्लड विल not clot. You will have some other problems also. So because all these vitamins A, B, C, D, E, and K, they are now very important for you. So they also give us ability to save us from all the diseases. They protect us from all the diseases, and they improve our immunity. Now, apart from these vitamins, now we have learned about vitamins. Now, what are minerals? We are going to study about minerals. Now, how are these minerals used in our body? Like iron, minerals like iron, calcium, sodium, potassium. These minerals are very important in our body. Iron, calcium, potassium, these are all very important for our body. Sodium is also very important, you all know. Why sodium is important? Sodium क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी में ये ब्लड में इसका अमाउंट जो है वो जो हमारी यूरिनरी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है. Now they are needed in very small quantities. These minerals are also needed in a small quantity, but they have very important role. इनका रोल बहुत important है, and they have play very important functions in all the processes of our body. For example, iron is very necessary for the carrying of oxygen in our body. Iron की बहुत जरूरी है, और आयरन की कमी से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हमको इनफ नहीं मिलता है, एंड वी आर फीलिंग वेरी वीक एंड टायर्ड. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया. तो आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है. Why iron deficiency causes anemia in our body? Because oxygen is not carried in all the parts of our body, so we feel weak every time. So we don't look fresh, and we are not feeling fresh every time. So this disease is known as anemia, and to avoid this we have to take iron in appropriate amount in our body. So this the mineral calcium also, you all know that calcium is very important for us because it keeps our bones healthy, teeth also, our bones and teeth healthy. Now because if we take calcium in less amount, or if our body does not have calcium, what is going to happen? Your bones will become weak, your teeth will become weak, and you will have other problems. So to avoid this, you have to take proper calcium in your diet. Now all kinds of fruits, vegetables and green leafy vegetables, sprouted pulses, sprouted मतलब जो अंकुरित अनाज होता है, जो हम आपकी मम्मी अगर यूज करती होगी घर में, अंकुरित करके अनाज को जर्मिनेट करके इसमें छोटी छोटी जब तक कोम आ जाती है उसको हम यूज करते हैं खाने के लिए. तो ये सब चीजों में होता है
minerals and vitamins. So sprouted pulses उनकी skin में, फिर bran of cereals, सारे अनाज को की जो स्किन होती है, जो हम यूजुअली अवॉइड करते हैं खाना, लेकिन उनको खाना चाहिए, एंड पल्सेस, दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड minerals. That is why as far as possible we should eat fruits and their skins, and we should not sift flour. Sift मतलब हमको फ्लोर आटे को छानना नहीं चाहिए, क्योंकि हम छानेंगे तो क्या होगा, उसका जो ब्रान है, जो आउटर कवरिंग है, वो तो छन जाएगा, वो अलग हो जाएगा, लेकिन जो उसकी जो एकदम फाइन पाउडर जो है वो हमारे यूज का नहीं रहेगा, लेकिन जो ब्रान है, जो कवर है, वो हमारे यूज का है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज हैविंग मिनरल्स एंड विटामिन्स. Now we should not throw away the bran. Now you all know that all kinds of fruits and vegetables are the powerhouse of minerals and vitamins. Now we are going to learn about the balanced diet. Now, what do we tell about ourselves when we say, I am fit and fine? Now, how can you say that you are fit and fine? Fit and fine means, how are you good in health? Fit and fine. What do you mean by that? Balanced diet. If you are having balanced diet, your diet has everything in appropriate amount: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, all everything. When you are taking in proper amount, in appropriate amount, then you will have a good health, which will be very beneficial for you, because you will not get ill, and your body will grow healthy. Now, being fit means what? You have enough strength and energy to study, play, and carry out all your work. When you're healthy, you will have all the energy. Our body is growing well, and we do not fall ill every now and then. Now we all wish to be, हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छी हेल्थ में रहें, गुड हेल्थ में रहें. सो हमारे बॉडी में सभी चीजें अच्छे से अप्रोप्रिएट अमाउंट, यानी बराबर मात्रा में हमको खाना लेना है हर चीज का, जैसे कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन लेना है, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स इन राइट क्वांटिटीज. अ डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल these constituents in right quantities means carbohydrates, fats, proteins, then you have minerals, vitamins, then you have fibers. Fibers can be called roughage also. So all these things, when you have in right quantities, when you take all these things in right quantities, ऐसे नहीं कि आपको एक ही एक चीज खाना है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाना है, या सिर्फ फैट खाना है, या सिर्फ प्रोटीन खाना. You should eat all these things. You should have in your diet. Your food should contain all these things for your diet, and this diet is called balanced. Why it is called balanced? Because it is having all these ingredients in right amount. Now you all know that food can be energy giving, body building, then for used for bodily processes, and which are used to resist diseases. So till now we have learned energy giving foods. What are energy giving food? Carbohydrates and fats. They are energy giving food. Energy giving foods are carbohydrates and fats.
fats. These are energy giving food. Then bodybuilding food. So this is known as building block of our food body. So they are proteins, building blocks. So they build our body and also help in wear and tear of the body. And at the same time, just now we learned about vitamins and minerals, which keep our body healthy and save us from different diseases. And this was about the different types of food which are very important. One, they give us carbohydrates and fats, they give us energy. Then proteins build our body and they help us in maintaining our body's repair, and also vitamins and minerals which help to carry on different functions in our body and also help us to save from different diseases. Now, do you all get different constituents of fruit from a meal that consists of green veg thali pit eaten with the yogurt? अगर आप थाली ग्रीन वेजिटेबल्स से आप थाली पीठ और दही के साथ खा रहे हो तो आपको सारे फूड मिल जाएगा उसमें? Yes or no? That you have to know. So it is yes, because थाली पीठ में हम डिफरेंट फ्लोर्स यूज कर रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, देन वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, और योगर्ट में भी, योगर्ट मीन्स दही, कर्ड, उसमें भी प्रोटीन होता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमको थाली पीठ में मिल रहे हैं. तो इसका मतलब ये इट इज अ गुड डाइट. नाउ which food constituents we get from the ingredients used to make bhel? जब हम भेल बनाते हैं तब हमको क्या मिलता है? उसमें हम यूज करते हैं पाउंडेड राइस, या फिर आप कह सकते हैं उसको पोहा, या फिर हम यूज करते हैं मुरमुरा जिसको बोलते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मिलते हैं. फिर उसमें एज ए प्रोटीन हम लोग दही भी यूज करते हैं उसमें, है ना, और भी दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं, और विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं उसमें. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स चॉप करके डालते हैं, है ना, भेल में, तो उसमें भी हमको डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल सकते हैं. भेल में हम ग्राउंडनट्स यूज कर सकते हैं, वो ग्राउंडनट्स भी हमको प्रोटीन के सोर्स हैं हमारे लिए. तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा फूड है भेल. नाउ वन ईटेबल एंड मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एक चीज तुम खाओगे लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, जैसे चिक्की या गुड़दानी आप बोलते हो. उसमें होता है नट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो जैगरी शुगर और आयरन से बनी है. बनाना में शुगर भी है, मिनरल्स है, फाइबर है. बॉइल्ड एग्स में प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है. ये सब कंप्लीट फूड है. सो वी नीड वेराइटी इन अवर फूड टू गेट all types of constituents. So now you all know about the different types of food items which are very necessary, appropriate amount for our body's growth, proper growth and development. Now tomorrow we are going to learn about nourishment and malnutrition, and you have to revise this lesson. So this was for today's video. Tomorrow we are going to learn further.